Hello friends, welcome to this YouTube channel. Today we'll be learning how to use future continuous tense. I have seen many students facing some problems. They do get confused between future indefinite tense and future continuous tense. They don't know where to use future indefinite tense and where to use future continuous tense. What is the basic difference between future continuous tense and future indefinite tense? So first of all, today we will be learning what is future continuous tense and what is the basic difference between future continuous tense and future indefinite tense. Hello दोस्तों, you are watching Spoken English Master. So without wasting time, let's get started. देखिए दोस्तों, first of all you have to understand where we use future continuous tense. Okay, not from Hindi. We have to understand the situation. For what situation we can use future continuous tense. Okay, see friends. We use future continuous tense to show any future ongoing action. Future ongoing action. What does it mean? फ्यूचर में कोई भी चीज चलता रहेगा, ओके, फॉर ए पर्टिकुलर टाइम. अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं ये काम करता रहूंगा, वो क्रिकेट खेलता रहेगा, वो गाती रहेगी, इस तरह का जो सेंटेंस होता है ना, तो फ्यूचर में कोई भी चीज चलता रहेगा फॉर सम टाइम. ओके, इन फ्यूचर इफ समथिंग गोज ऑन फॉर सम टाइम वी यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. लेटर ऑन आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आल्सो. ओके, सो फ्रेंड्स, we have to understand the formula subject plus shall oblique will. Okay, after that be we have to use. Okay, because directly after shall or will before means ing form of the verb cannot be used. That's why in between these two things we have to use be, and after that object we have to use. Okay, so subject plus shall oblique will plus be plus before means ing form of the verb, then object. This is the structure. Using this structure we can make so many sentences. Now I have seen actually I have written few sentences over here. Okay, I'll read one by one. Let's see. I will be doing this work. I will be doing this work. मैं ये काम करता रहूंगा. Okay, मैं ये काम करता रहूंगा. In future, okay, future में ये काम चलता रहेगा. To show this, we are using future continuous tense. उसके बाद देखिए, she will be singing a song. She will be singing a song. वो एक गाना गाती रहेगी. Okay, वो एक गाना गाती रहेगी. Okay. नेक्स्ट, यू विल बी मेकिंग टी. तुम चाय बनाते रहोगे. तुम चाय बनाते रहोगे मीन्स दिस विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर. नेक्स्ट, राम विल बी स्पीकिंग इंग्लिश. राम इंग्लिश बोलता रहेगा. राम इंग्लिश बोलता रहेगा. अगर मैं ऐसा बोलूं यहाँ पे, राम विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश. ओके, इन इंग्लिश अगर मैं बोलूं तो राम इंग्लिश में बोलता रहेगा, ऐसा होगा. अगर मैं ये काट दूं तो राम विल बी स्पीकिंग इंग्लिश मीन्स राम इंग्लिश बोलता रहेगा. ओके, नाउ आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. देखिए दोस्तों, अगर मैं ऐसा बोलूं, आई विल डू दिस वर्क एंड आई विल बी डूइंग दिस वर्क, व्हाट इज द डिफरेंस? आई विल डू दिस वर्क ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम आई बटन. यू कैन वॉच दैट वीडियो. I will do this work, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा. और I will be doing this work means मैं ये काम करता रहूंगा. Means I will do this work, I will do it for one time and this one will be going on for some time. ये future ongoing action, future का continuous tense. future में कोई भी चीज continuously चलेगा. ठीक है, यही डिफरेंस है. So if something goes on in future means any future ongoing action, we use what? To show that we use future continuous tense. Now one thing I just want to mention over there, this sentence can be written in different way also. Suppose if you don't know this formula, if you know only future indefinite tense formula, which is subject plus shall oblique will plus V1 plus object. This is the formula of future indefinite tense. Okay, so using this formula you can create this sentence. कैसे होगा? देखिए, I will be doing this work, मैं ये काम करता रहूंगा. उस फॉर्मूला में कैसे होगा? I will keep doing this work. I will keep doing this work. Same meaning है. So either you can use this one, I will be doing this work, मैं ये काम करता रहूंगा, or you can write like that, I will keep doing this work. Meaning is totally same. There is no difference. Understood? This one, she will keep singing a song. वो एक गाना गाती रहेगी.
You will be making tea. तुम चाय बनाते रहोगे, so you will keep making tea. Same meaning. Ram will keep speaking English. राम इंग्लिश बोलता रहेगा. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू मेक दीज सेंटेंसेस नेगेटिव इंटरोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव इंटरोगेटिव. ओके, बिकॉज ऑल पार्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. एज आई टेल इन ईच एंड एवरी वीडियो, whenever you are learning any particular formation or any particular tense, you have to make that particular sentence in 4 parts. Affirmative, negative, interrogative, negative interrogative. Okay, दो तरह का क्वेश्चन होता है, पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन. नाउ आई विल टेक दिस पर्टिकुलर सेंटेंस एंड आई विल मेक इट नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव. ओके, सो लेट्स सी. सी फ्रेंड्स, हाउ आई डिड. आई विल बी डूइंग दिस वर्क. मैं ये काम करता रहूंगा. आई ओंट बी डूइंग दिस वर्क. आई ओंट बी. ओंट कैसे आया? विल नॉट. विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म यहां पे मैं लिख रहा हूं. देखिए, will not का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? देखिए, owned. will not, owned. like do not, don't, does not, doesn't, have not, haven't, has not, hasn't, ऐसे will not, owned. ठीक है. so I won't be doing this work. मैं ये काम नहीं करता रहूंगा. will I be doing this work? क्या मैं ये काम करता रहूंगा? won't, will not. won't I be doing this work? क्या मैं ये काम नहीं करता रहूंगा? ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं. देखिए, I will be doing this work. मैं ये काम करता रहूंगा. I will not be doing this work. मैं ये काम नहीं करता रहूंगा. Will I be doing this work? क्या मैं ये काम करता रहूंगा? Won't I be doing this work? क्या मैं ये काम नहीं करता रहूंगा? Okay, so in this way you can make 4 types of sentences. All parts are very much important. Okay, so today what we have learned? Today we have learned the difference between future indefinite tense and future continuous tense, as well as how to use future continuous tense properly. I hope you enjoyed this video. If you have understood as well as enjoyed this video, so don't forget to hit the like button and don't forget to subscribe to our channel to get notified for future updates like this. Okay, so that's all for today. Next day again we will meet and again we will learn something new. And I have uploaded so many grammatical rules, means so many videos on grammatical rules, so I'll give the link in the I button and from playlist also you can watch. So for today, thank you, thanks for watching. Next day again we will meet and again we will learn something new.